And we are live. Can you all hear me? कोई है लाइव स्ट्रीम में? I can see Kaushik. Kaushik is here. Hey Kaushik, can you hear me? Just confirm the audio, please. Is it, I mean, yep, loud and clear. Okay, cool, 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 cool. Who else is here? Please say, please, drop a text. As usual, we will wait till 7:10 for people to join, and we'll start go about business then. Quantumverse is here. You're new. Hey Quantumverse, thanks for joining the live stream. What is your name, by the way? Is it the new mic? Yes. Ta-da. It has noise cancellation as well, I think. So I'm glad to know that it's much better. Mehul. Okay. Thanks for joining the live stream, Mehul. We usually wait till 7:10 for others to join, and then start start the drawing. Caustic says, very cool, very cool. Not as cool as your new pages, man. Oh, Rohit Bhai is here. Hello, Rohit Bhai. How are you? Thanks for joining the live stream. I'm a little curious. What's your age? My age. I am 28. I turned 28 just August, September, October. 3 months back. Do I look older than my age or younger? Cossack says thank you. Oh, by the way, guys, please hit the like button. That really helps. Seven four. Rohit bhai, what are you reading these days? I think you're a very regular reader, right? I've seen a lot of your posts on Facebook talking about comic books. Quantum versus, no, you are 1 year younger than me. Oh, okay. Right. Digi bhai, always, Pahadi always look younger than their actual age. Yeah, but some people have, when people ask for my age and I told them to guess, some people have guessed like 32. I think सबसे ज़्यादा किसी ने 32 बोला है मुझे. Which is a little funny. I mean, I definitely don't look 32, is what I feel. Today was quite productive for me. मैंने आज एक पेज पेंसिल किया जो रॉयल एनफील्ड के लिए जो मैं कॉमिक बना रहा हूँ उसका, एंड I cooked proper meals today and did some laundry, So it was quite productive. I'm quite happy.
Rohit Bhai is saying, mm, um, are still doing that Indian Spider-Man comic for Marvel. Mehul, no. That series ended with that was a mini series, so it just had 5 issues, and I'm all done. I finished those 5 issues like 3 years back, I think. So yeah, I'm not actively working on any project for Marvel at the moment. Kaushik says, Rohit Bhai says, I'm reading DuckTales by Don Rosa, son of the Son of the Sun. Okay. Interesting. DuckTales. I haven't read any DuckTales comics. I have only watched their cartoons, which I remember enjoying a lot as a kid. Kaushik says, I actually have a question. When I draw and send the pages, they look good, but when I look at them the next day, I'm able to detect mistakes a lot easier. Kaushik, that just means that you are growing as an artist, that you are able to see your own mistakes. Just make sure that you learn from those mistakes and try not to repeat them in your next pages. Kaushik says, do you usually sit on your pages for a while before showing it to someone? Not really, when I finish something, I'm really excited, and if I like something, actually, I get really excited and I directly send it to clients. But if I have some time on hand, I sit on it for a day or something, and then if I see some mistakes, then I fix them. And uh, I did that with Marvel actually. When I was sending them pages, I would usually sit on the pages for a day, or sometimes if I had some time, then I would like double check and send them the pages later. रोहित भाई says इंडियन कॉमिक्स लेटेस्ट कोई रिलीज तो हुई नहीं है. इंडियन कॉमिक्स में विचित्र पुराण रिलीज हुई है, चित्र गाथा कॉमिक्स से, एंड आई रेड इट, आई थिंक परसों. Interesting book. It's an anthology, and I always like anthologies. It's a good book. I enjoyed it. रोहित भाई से आपकी आरी वाली सीरीज मिस हो गई थी. रोहित भाई, आई थिंक फर्स्ट इशू अभी भी आपको क्रॉसवर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा. लिमिटेड एडिशन है, हार्ड कवर. उसके बाद वो दोबारा रिप्रिंट नहीं होने वाली है. एंड बाकी 4 इश्यूज़ और आने वाले हैं जिन पे मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ. वो आपको अगले साल मिलेंगे, अराउंड मुंबई कॉमिक कॉन के टाइम पे. Kaushik says, yes, sir. Mehul says, and what about Indian publishers like Holy Cow or Yali Dream Creations or Cheeseburger Comics? Are you working on special comics? I am working on a comic book series for Royal Enfield, the motorcycle company, and I'm working on a creator-owned comic as well. And there's this new publisher named The Hierophant Entertainment. So I just finished a comic book issue for them. Rohit Bhai is saying, Bhai, do read these comics. Their artwork is amazing. Yes. I mean, I think all of Disney comics have really beautiful, like, top-notch artwork. So I'll definitely give it a try. When we're talking about the comics, yes. Madhya. Yay, new mic. Yes. So it's 7:10, guys. Let's get to business. Hope you all can see the screen. How you deal with burnout? How I deal with burnout? Usually, I try to streamline my process so that I don't burn out at all. I try to avoid it at all costs. But even if I do burn out, what I do is I usually take a day or two off and do things that are fun for me. Watching a film, hanging out with friends, getting drunk maybe. Stuff like that, And then the urge to draw usually comes back to me. So, that is how I deal with it. I imagine it would be different for everyone.
So guys, we are done with the rough pencils of this page. As you can see, we will be cleaning up these rough pencils and, adding details. I have the references with me. These references are open in a different window in the monitor that is in front of me, but you all can see the references here on the screen. So what I'll do is I'll make a new folder here and then turn those lines blue again, make a new layer, take this perspective ruler, lower the opacity of this folder, hide this because that is kind of disturbing, right? So that I don't get distracted. I'll hide that, and now I will do the final pencils. Mehul is asking where I live. Mehul, I'm from Arunachal Pradesh. I live in Arunachal Pradesh, but I lived in Delhi for nearly a decade. Oops, forgot to turn the ruler on. I think we'll be almost done with this page today. By the way, guys, please hit the like button. I can see 7 of you are watching the stream, but only 3 of you hit the like button. So please do me a favor and hit the like button. That really helps. In the meantime, you can keep the questions coming so that I have stuff to keep blabbering about. Is this video a teaching video where you teach beginner about digital artwork? This is a video series actually, Mehul, where I'm teaching more like walking the viewers through my process of creating a comic book page. So yeah, it's sort of a teaching video, I guess. Oops. Lately, I have been watching a lot of videos on mindfulness, trying to reduce my screen time and all. I found this really nice channel called Monkey Brain 101, I think. They explain mindfulness in a fun way, So, really finding that helpful. If you guys are into that sort of stuff, do check it out.
That's done. So one building. Let's do another one. Okay. Papia Mandal says, hello, sir. Hello, Papia. Yash Vihari Arts. Hello. There are very few outdated tutorials for CSP iPad version. Is the iPad version too different, or can I go with the desktop? It's almost the same. It's almost the same. I mean, if you know how to use CSP on a desktop, then if you are using it on an iPad, you won't, I mean, there's not much difference. Not in performance, not in functions, and all of that. So I keep going back and forth, like using CSP on my desktop and my iPad. Mini Mangaka. Hello, sir. Please, traditional inking. Mini Mangaka, once we are done with this series, I'll be doing a lot of traditional art. Saw your Ravan art book. आपका एड्रेस मिल जाता तो किसी दिन दिल्ली आके चोरी की जाए. Rohit bhai, I'm not in Delhi anymore. I'm staying in Arunachal now. I moved back here in May this year. But I'm coming to Delhi Comic Con. अगर आप वहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा स्टॉल होगा वहाँ पे. मेरे स्टॉल पे ज़रूर आइएगा. मिलते हैं. If you're into like collecting original art and all of that, so I'll have a lot of original art for sale with me. Also, I'll be doing pre-show commissions जो कि मैं अनाउंस करूँगा अपने सोशल मीडिया पर. Pre-show commissions, if anybody is unaware, basically are commissions that you order before the show and then you can pick them up from the show itself. Mehul says, actually I want to start my own comics which I want to release on Webtoon. So right now I'm just watching a lot of videos and do practice of making videos. Okay, that's great, man. I mean, drawing comics is always fun. हेलो विंध्याश. नहीं यार, थोड़ा सा ही लेट हो. पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? Oops.
हेलो प्रीत, मिनी मंगा का क्या आप अभी पेंटल पॉकेट ब्रश पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई और टूल्स? हाँ, मैं पेंटल पॉकेट ब्रश का इस्तेमाल करता रहता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। अरे अरे, छोटे वाले बड़े आर्टिस्ट आ गए। I have also a lot of stories, and I also make manga, and I want to publish my manga style comic and old Indian style. Great. One unsolvable problem with iPad drawing is Apple Pencil needs recharging every 2 hours. I never found that problem with me actually. I think um, my Apple Pencil goes on for a long time. Which generation do you have? Which generation of Apple Pencil do you have? I have the second gen, I think. The one with magnetic charging. भैया, विंडोज़ की डिस्टेंस क्या आप अंदाजे से बना रहे हो? हाँ, बट मैंने पहले इसके लिए एक ग्रेड बनाया है जो अंदाजे से बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि इतना गलत नहीं लगता, इवन दो थोड़ा बहुत इसमें गलत हो सकता है। वो प्रीवियस वीडियो में है, देख सकते हो। पेंटल aqua brush pen. What is your favorite tools now? I usually use a brush, this brush. You will find the links to all the tools that I use in the description of this video. So if you're curious, you can check that out. Oh damn, I'm using the okay, Apple Pencil Pro with iPad Pro. Okay, I haven't used the uh, Apple Pencil Pro, man. Maybe that one, requires more charging. I mean, drains the battery faster, maybe. I have an M2 iPad actually, older generation. See, digitally काम करने के ये फायदे हैं. You can do a lot of correction, without ever damaging the paper or making a mess. See how easy it is to make to draw the windows. Oops. If I'm doing this traditionally, it will take me forever. Forever. Please hit the like button, guys. I'll keep giving you all, I'll keep reminding you all.
until I get 100 likes on this video. Can you guys hear any background noises though? गाड़ी के चलने की आवाज़ या लोगों के बात करने की आवाज़? Asking just to confirm the quality of noise cancellation on this mic. Is Samsung Galaxy Tab 11 a good tool for the creation of comics? I haven't used a Samsung Galaxy Tab, but according to the reviews, they say Samsung, apart from Apple, Samsung makes the best drawing tablets. They have the best pen among all the Android tablets. So I suppose it's a good tablet. Please, what tools name what you used recently? Mini Mangaka, I will make a dedicated video on that, but in the meantime, please check the description of this video and you will find all the links and details of the tools I use. No. Okay, very good, Mike. Good to know that. मैं सिर्फ पेंटल की ब्रश पेन और oh my god, ये ना एक what to say, एक हार्ट रिएक्शन वाला ये है, उसमें कमेंट्स पूरा पढ़ने में मुश्किल हो जाती है मुझे. और माइक्रॉन्स यूज़ करता था इंकिंग के लिए. कल टॉम्बो के हार्ड और सॉफ्ट टिप ब्रश पेन्स लिए हैं जो कि मार्कर्स जैसे हैं. हाँ, आई लव दोज पेन्स, मेरे पास भी हैं दोनों. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू लर्न decent drawing for digital comics? Well, it depends on your aptitude, you know. I would say drawing functional comics is not that tough, but getting to that higher level of artistry, I think that becomes more and more tough as you try to keep getting better and better, you know. So it's like reaching that 50% level is not that tough, but then moving ahead from that 50% level is the tough part. I don't know what these boxes are. I'll just figure something out later.
Hmm. दीपक पटेल, क्यों हंस रहे हो भाई? डिजिटली ड्रॉ करने में ऐसे तो दिख रही है, बट फॉर नॉन आर्टिस्ट रेसर्स लाइक मी के लिए तो ट्रेडिशनल आर्ट वाला वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वो ये जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी तब I'll do a lot of traditional drawings. Is the mic Holyland A1? Yes, yes. And thank you so much for recommending that mic. Swarna Chitra Studio. So does it take a lot of time, like 6 months or a year? Mehul, again, that depends on your aptitude, how quick you are with uh, learning new skills. It could take a year, 6 months, 3 months, or I have seen some people trying to draw comics for as long as I know them, but still they cannot do a good job at them. So, you know, it totally depends on what is your aptitude level and how good you are at picking up new skills. But it's also about discipline, if you keep at it, it's, I mean, you get better at it every day, it's like compounding. You keep drawing and you keep getting better and better and better and better. मुझे ये बहुत पसंद है, ऐसे खिड़कियाँ बनाना। सी, how do you know you have reached the 50% level? I think you'll just feel it, and people will tell you as well. You can take feedback from people you respect in the field. रोहित भाई, आपको एफबी मैसेंजर पे एक रीसेंट आर्टवर्क शेयर कर सकता हूँ अपना? हाँ जी रोहित भाई, प्लीज़ फील फ्री. Abhinav, how should I study and practice composition? Go to websites like Short Cafe and Pinterest and search for good cinematic shots from good films which have like good cinematography, and copy those shots. That will definitely improve everything you need to know about visual storytelling. That will improve your lighting, that will improve your composition, perspective, and everything. Even if you do like color studies, it will improve your colors as well. ये बिल्डिंग्स बनाना काफ़ी बोरिंग लग रहा देख के. हाँ, बोरिंग तो है. किरीकी का कहर का रेफरेंस लेके कुछ अनशंट काम किया था फ्यू डेज बैक, प्लीज़ शेयर. पर आजकल ऑफिस के बाद टाइम ही नहीं मिल पा रहा है करने का. या आई अंडरस्टैंड. हमारा तो काम ही है, फिर मतलब मेरा तो ड्राइंग का काम ही है, बट मुझे खुद टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कुछ करूं अपना खुद का. और आप लोग तो कुछ और ही करते हैं काम, तो आई इमेजिन कितना मुश्किल होता होगा. बट स्टिल मतलब आप लोग फिर भी लगे रहते हैं, और आप ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद यू आर वॉचिंग माई लाइव स्ट्रीम. आई एम ग्रेटफुल रोहित भाई. आई मीन यू ऑल आर गिविंग योर टाइम एंड अटेंशन. जबकि आई डोंट नो, यू गाइस कुड हैव बिंज वॉच नेटफ्लिक्स और समथिंग मे बी. हालांकि आजकल नेटफ्लिक्स पे ऐसे ऐसे घटिया शोज़ आने लग गए हैं कि उनसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो मैं ही दे देता हूँ शायद यहाँ पे.
You're welcome, Abhinav. आपका स्ट्रीम मेरे लिए ऐसा मैं एक काम करता हूँ, मैं ओनली फैंस का खोल लेता हूँ एक. I'm pretty sure I'll be earning a lot more on OnlyFans. वहाँ पर जाके आधा नंगा होके कॉमिक आर्ट सिखा रहा हूँ. Does this Pakistani teacher know जो OnlyFans पे चली गई थी and she's like teaching physics there and reportedly she's like earning 1,000 times more than what she was making on YouTube. द हॉन्टर. तो क्या अब हम ये समझे कि नेक्स्ट ईयर तक नेटफ्लिक्स भी लॉन्च करेंगे? भाई उन्होंने मेरा नाम चुरा के ना अपना वो बना दिया, देखो, टुडुम बना दिया है. मेरा लॉसूट अभी भी चल रहा है उनके अगेंस्ट. जैसे ही वो लॉसूट जीत के ना मेरे 200 मिलियन आ जाएंगे, मैं अपना स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दूंगा. नहीं, रॉन्ग काइंड ऑफ पेंसिल्स ब्रदर. Have you ever thought about making a personal IP other than freelance? Yeah, I am working on my own IP actually these days. How Marvel have approached you when they wanted to work? Mm, they emailed me. ओ बढ़िया रहे. पुनीत भाई, भाई मत करना, लोग समझ नहीं पाएंगे कि कमा किस बात कर रहा है. Some books to help with composition. Framed Ink, Volume 1 and Volume 2 by Marcus Matthew Mestre. You'll find the links to those books in the video description. Check it out. If you buy the books using the link that I have provided in the description, I get a small commission out of your purchase. No extra money from your side. Amazon pays me. मदिया दोनों तरफ से कमाएंगे. कनिश, रॉन वीकली की जीएफ भी है वहाँ. Ron, who is Ron Weekly, by the way? Is it really that simple? Quantum verse. What is that simple? Mehul, I didn't get your question. Sorry. Sorry, late join किया. कोई बात नहीं विशाल. Bang Molly, picture this perception and composition. Ron Weasley. Ron Weasley. Ron Weasley. Ron Weasley, Harry Potter वाला.
Guys, please hit the like button. Really helps the video and me. Someday I would love to go to New York. ये स्पाइडरमैन जो सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन है ना फिल्म, उसको देखकर कुछ अलग ही फैसिनेशन हो गई है मुझे इस शहर से. See kids, this is how you draw windows. Mehul, you just told that Marvel messaged you when they wanted to work with you. Yes, I mean, they saw my work and they got in touch with me. It is that simple. रोहित भाई, तीजी भाई, ताज़ा खबर आई है, विराट पर्व का प्री ऑर्डर पोस्ट हो गया. हाँ जी, मैंने देखा था. एंड लेकिन वो 7 तारीख को रिलीज़ हो रही है. आई एम गेसिंग मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली कॉमिक कॉन के लास्ट संडे को. एंड मैं वहीं आरसी के स्टॉल से लूँगा वो बुक. प्री ऑर्डर तो नहीं करूँगा. विशाल इज आस्किंग, भाई आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो ड्रॉ करने के लिए? मैं वैकॉम सिंटिक 16 इंच वाला सिंटिक प्रो यूज़ कर रहा हूँ. मुझे अमेज़ोन पे एक्चुअली वैकॉम के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं. आई वुड से कि आप वैकॉम के प्रोडक्ट्स अगर आपके पास बेशुमार पैसा है तभी खरीदिए. अदरवाइज़ होयोन या एक्सपी पेन का टैबलेट खरीदिए. दे आर ऑलमोस्ट एज गुड. मुझे ये जो है अमेज़ोन पे रिफर्बिश्ड वाला मिल रहा था, सो आई बॉट इट ऑलमोस्ट 55% डिस्काउंट पे. पुराना मॉडल है बट इट वर्क्स क्वाइट वेल. इससे पहले मैं हुयोन यूज़ कर रहा था, हुयोन कैनवस. विशाल, हाउ मच दिस ड्राइंग टैबलेट कॉस्ट? मेरे को पड़ी थी 60,000 शायद. रोहित भाई, पूरी कॉमिक्स कम्युनिटी में जश्न की तैयारी. हाँ, वो बाहुबली का याद आ गया मुझे सीन. उत्सव की तैयारी करो वाला सीन नहीं है? Arnav, I saw Craig Mullins talking about how he spent his entire career working in the industry and he has nothing to show for as his property. उसके बाद ही realize हुआ कि yes, that is true. अपने आईपी पे भी आजकल आईपी का गेम है. प्लीज़ डेवलप योर ओन आईपीज एज वेल. यू नेवर नो, यू नो, कुछ भी हो सकता है. बेशुमार पैसा, टीजी भाई अपनी अमीरियत फ्लेक्स करते हुए. मेरे पास बेशुमार पैसा नहीं है इसलिए मैंने सेकेंड हैंड खरीदा है. अमीर तो मैं दूर दूर से नहीं हूँ. मैं दिल्ली से इसलिए भाग गया था 2 रीज़न की वजह से. एक तो वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा था बहुत सारा,
मेरे लिए अनबेरेबल हो गया था और मेरा खर्चा बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। रेंट इज फ्रिकिंग एक्सपेंसिव। और मेरा कोई ख़ास काम भी नहीं था दिल्ली में, तो क्या करूं वहाँ रहकर जब सेम चीज़ मैं घर से भी कर सकता हूँ। रोहित भाई, वेयर डू यू लिव बाय द वे? आप दिल्ली रहते हैं क्या? मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे खिड़कियाँ बनाने में। द हॉन्टर भैया, सिर्फ फ्रैंक मिलर का आर्टवर्क थोड़ा अजीब लगता है, बट स्टिल वो इतने फेमस क्यों है? फ्रैंक मिलर का, उन्होंने जब शुरुआती दिनों में डेयर डेविल बनाई थी, स्पेशली डेयर डेविल बॉर्न अगेन और बैटमैन की द डार्क नाइट रिटर्न्स एंड बैटमैन ईयर वन, इन तीनों किताबों का आर्टवर्क देखना और कहानी देखना फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों फ्रैंक मिलर इतने फेमस हैं। आर्टिस्ट जो होता है ना, जो मतलब हमेशा ग्रो करते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो रियलिस्टिक काम करते, मतलब दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रेक देयर ओन बाउंड्रीज, ब्रेक देयर ओन लिमिट्स, फिर आर्टिस्टिकली सेम चीज़ करते 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 कुछ लोग बोर हो जाते हैं, फिर वो चीज़ों को ब्रेक करना शुरू करते हैं या फिर खेलना शुरू करते हैं उनसे। तो फ्रैंक मिलर का जो अभी करंट वाला फेज़ है, मैं उसको वैसे देखता हूँ कि वो ट्रेडिशनली जैसे वो लोग, जैसे वो हमेशा ड्रॉ करते थे, उससे थोड़ा बोर हो गए हैं शायद, एंड ही इज़ ट्राइंग टू प्ले विद द फॉर्म एंड प्ले विद द एनाटॉमी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं, मतलब दिखने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, बट अगर उस नज़रिए से देखो तो इट सीम्स मोर डाइजेस्टेबल, इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रैंक मिलर डजंट नो हाउ टू ड्रॉ, ही डज। According, Mehul says, according to why Indian comic book industry is not a mainstream thing like Marvel, DC, and so on. Many reasons, but probably the main one being that Indian comics publishers could not evolve with the arrival of internet and TV and all of that. Stories वगैरह, the main problem that Indian comics faces these days, especially the older publishers, I feel, is the stories, the way of telling stories has not matured like it did with in the Western or European, American or European comics or manga. That's the main reason I feel. देहरादून, ओके, यूके। नहीं, जितना बनाने में टाइम लगता है, काश एक रीडर को पता पेज पलटने में टाइम लगता, मजा आ जाएगा। सही बात है। सॉरी भैया, दोबारा लेट होने के लिए, किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। अरे कोई नहीं, बात नहीं विद्यार्थ, यहाँ फाइन नहीं लगता लेट होने का।
Mehul, can you also learn the art by copying big artists? Yes, you can. That's how I learned during my school days. रोहित, पुनीत जी उतना टाइम लगे तो 3 months लगेंगे कम. यस, थोड़ा ठीक ठीक लगाइए. Post school, I just now finished watching the last live stream. Woohoo. Okay, thanks for watching, man. Please hit the like button on this video now. Okay, I'll take a break from reading the comments, and I really appreciate though that you are also active in the comment box, but need to finish the page as well. So I'm just referring to random buildings in the reference image that I have in front of me, and you know, I say you know a lot, right? It's already 1 hour. 7:53 already हो गया. I think इसको finish करने में I'll need what? Maybe 2 more sessions. Actually, backgrounds take a long time, guys. बैकग्राउंड्स में बहुत टाइम लगता है. और ऊपर से मैं और ज़्यादा स्लो हूँ, तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगता है. प्लीज़ लेट मी नो जब मेरा वेबकैम मर जाए. 1 घंटे की बैटरी रहती है यूजुअली. मेरा DSLR, आई मीन टू से मेरा कैमरा, जिसको मैं फ़िलहाल वेबकैम की तरह यूज़ कर रहा हूँ. This is tiresome. चलेगा. कुछ कॉमिक्स बार बार खोलने का मन कर जाता है, आर्ट वर्क अच्छा हो तो. इंडियन कॉमिक्स में किसी कॉमिक का नाम बताएं रोहित भाई, जो आप बार बार खोलते हैं. उसको says I hit the like already. I know the drill. Thanks man. द हंटर. भैया मुझे एक पेज की पेंसिलिंग में 3-4 दिन लग जाते हैं, तो स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? एटलीस्ट आपके जितना स्पीड कैसे अचीव कर सकते हैं? पेज को ना थोड़ा क्लेवरली डिज़ाइन करना.
हर पैनल में एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजअप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मिड शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और थोड़ा सा क्लेवरली प्ले करो। मैं चूँकि काफ़ी स्लो हूँ तो मैं वैसा ही प्ले करता हूँ। जैसे ये पेज है ना, देख रहे हो, इसमें मैंने इस पैनल पे कोई बैकग्राउंड नहीं डाला। यहाँ पर बैकग्राउंड है दो, और यहाँ पर है ये वाले, इस वाले पैनल पर, इस वाले पर। बट ये लास्ट दो पैनल्स देखो मैंने क्लोजअप में छोड़ दिया। तो वैसे थोड़ा सा क्लेवरली प्ले करना पड़ेगा अगर स्लो हो तो। स्लो हो तो, जैसे ही मैंने बोला मुझे एक गाना याद आ गया। आई एम सॉरी, कांट हेल्प बट सिंग इट। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। Mehul says, according to you, traditional comic book company or digital comic book company, which is best? And also talk about how to do the marketing. I prefer traditional. I prefer reading printed comics. So my vote will always be with like traditional comic book publishers. Marketing, I'm not an expert on that, buddy. So I don't know what to say on that. Have you read Black Sad? Yes, I have. And I love it. One of the best comics that I have ever read. Spidey, ये रहा Spidey. अरिजीत सिंह विलन, भाई साहब किसने ये फरहान अख्तर का गाना है वैसे। आई थिंक रॉक ऑन मूवी से है। आई एम सॉरी आप लोगों के कानों को इतना टॉर्चर दे रहा हूँ, दिया मैंने, आई मीन आगे और नहीं कहूँगा। कोई आप लोगों में से दिल्ली कॉमिक कॉन आ रहा है क्या, बाय द वे?
Have you seen Thama? Do you like it? And do you like the world building they have done? I haven't seen Thama. I did not like the trailer. I don't know if I'll see it. Maybe when it comes, releases on OTT, I'll give it a try. But I did not like Aditya Sarpottar, the director of Thama's previous film that was Munjia, I think. I did not like it at all. I mean, it was like 2 stars out of 5 for me. People liked it apparently, and uh, going by the box office numbers of Thama, it seems that people are liking Thama as well, but not for me, I'm afraid. The only film that I liked the most, the film that I like the most in the M.H. Maddock horror comedy universe is Stree, the very first film. And then I think I liked Bhedia also, but not as much as Stree. मुझे वैसे इनकॉग्निटो बहुत पसंद है. ओके, इनकॉग्निटो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. Something is killing the children is getting series. I read somewhere. Yes, Blumhouse is making it, I think. आपकी प्लेलिस्ट में किस तरह के सॉन्ग्स होते हैं? मिक्स, पुराने नए, इंडी, इंग्लिश, हिंदी. आई थिंक मेरी स्ट्रीम की क्वालिटी कैसी है गाइस? कैन यू सी इट प्रॉपरली, या फिर बहुत ही लो क्वालिटी में स्ट्रीम हो रही है? प्लीज़ लेट मी नो. रिसेंट में ब्लैक शीप का आर्टवर्क भी बहुत इंप्रेसिंग था. उसको डू यू फील द कॉमिक्स रीडर बेस इज ग्रोइंग इन इंडिया? I think so. Slowly, but I think it is growing. Mehul says, I like Nagaraj Comics, but Raj Comics is doing nothing, and I'm sad when the news came out that Nagaraj Comics is getting 3% in Bollywood, making Nauzila with Kartik Aaryan. Yeah, it is a sad affair, man. अच्छा है ना, देखिए फर्स्ट हाफ बहुत अंडरवेलमिंग है. अच्छा है ना, ही देखिए. Okay. They try too hard to become funny. Yeah, that is the problem, no? It's, I mean, comedy movies these days, I don't know. They just they try too hard, and I don't know, I find it hard to like laugh. You enjoy horror? Not much. I get scared easily. But yeah, bro, stream quality is good. Okay, thanks. Oh, hey Rion. Rion is here. The silent observer. मेरे जहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ एक्चुअली, वहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी में आ रही है स्ट्रीम. That is why I wanted to confirm. Confirm. I'm Batman. Empire State Building.
I find it hard to copy things, Also quite boring. I need to make this building look like the Empire State Building, and I'm struggling a bit. So I'll just simplify it, just try to make it look like the Empire State Building overall instead of trying too hard to make it an exact copy. Doesn't have to be an exact copy anyway. So there I'll have to trace it. I think it looks kind of close to the Empire State Building now. Which is the favorite genre of yours when you want to see movies? I just like to see good movies. I don't really have a favorite genre actually. Or maybe Sword and Sorcery, I think. Conan and Red Sonja style movies. Benis is asking स्टाइलस के नेम्स कितने जल्दी ख़त्म होते हैं आपके? बहुत टाइम लगता है. जब से मैंने ख़रीदा है, आई थिंक मैंने ये टैबलेट पिछले साल ख़रीदा था और ये वही स्टाइलस यूज़ कर रहा हूँ मैं. सॉरी, वही निब यूज़ कर रहा हूँ. द हॉन्टर तदम भैया तो आज आर्टिस्ट से बिल्डर बन गए. आर्किटेक्ट. So if as a beginner I try to make an IP where I make a superhero universe which takes inspiration from the Brahmastra movie, or do that kind of stories have scope? As long as you're telling a good, compelling story, everything has scope, dude. But my only advice, suggestion would be to, start small. Making comics is really tough, man. So start small, test the waters first, and then if you feel confident enough, then go ahead with full force.
Whew. Still so many more buildings to go, man. कॉपी करो तो बोरिंग लगता है, खुद से बनाओ तो लगता है प्रेफरेंस से बेटर बनेगा। यस, एमएलजी का ऑर्डर लगा दिया है, लगा दिया। अब जल्दी से बद्री कंप्लीट करिए। आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम स्वयंभू। बद्री की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आई एम श्योर यू लाइक इट, और मैं भी मेरे ख्याल से अच्छा काम ही कर रहा हूँ। सो जल्दी कंप्लीट करता हूँ उसको। ओह, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग एमएलजी वैसे रोहित भाई। Okay, now I can play around with the shapes a little more, क्योंकि अब हम दूर पहुंच चुके हैं। If I play kind of cheat on the details a bit, उतना फर्क नहीं पड़ेगा अब। अभी बस मैं शेप्स में खेल रहा हूँ। आई विल नॉट बी पुटिंग मच डिटेल नाउ।
रोहित मेहुल सिंह, इसके अलावा कोई जॉब भी करते हो क्या? बहुत हुई इंग्लिश में बात, ऐसा फील हो रहा है बहुत मिस्टेक्स की है अपनी हिंदी की, ठीक है। नहीं, मैं एक फुल टाइम कॉमिक बुक आर्टिस्ट हूँ। Also, true, start small is such an underrated. I ended up not following. Testing water, so true. My first project, which is an ongoing horror graphic novel, is now 140. Dude, 140 pages. My God, that's a what you say, a Herculean task. I couldn't even imagine. I when I was starting, like I had such a tough time doing just a 32-page comic, and you are going for a 140 pager. The longest comic book that I ever did was 120 pages. That is Codename Alpha. And it took me around 1.5 years or 2 years, I think, to finish it. The Haunter. भैया, अविनाश इतनी कम एज में इतना अच्छा आर्टिस्ट कैसे है? प्योर हार्डवर्क या अच्छी गाइडेंस? आई थिंक हार्डवर्क और उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, यू नो एक सीखने की एक आपकी एज अ इंडिविजुअल एक क्वालिटी भी तो होती है ना, कि आप कितना ग्रास्प कर पाते हो। तो अविनाश का वो अच्छा है कि वो काफ़ी अच्छा ग्रास्प कर लेता है। जिमली को कितना अच्छा पकड़ा उसने, देखो। और ये भी है कि ही वॉज विद होलिका एंटरटेनमेंट, जहाँ पर विवेक जी गाइड कर रहे थे उसको, तो गाइडेंस ऑल्सो हेल्प्स, बट गाइडेंस का क्या ही हो जाएगा अगर आपने खुद मेहनत नहीं करी तो। I will finish this panel today and then we will stop. Meet some 15 minutes more, I think. But thank you so much for being here, guys. काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर हैं। मैं शायद आप लोगों की जगह होता तो my patience would have run out. So, really appreciate you all being here.
we work on the Spidey silhouette. Whenever you're, I'll just repeat myself. Whenever you're drawing a silhouette, make sure you're keeping the form properly readable and simple. Just realize that, when I make it all black, that hand might look weird, like coming out of his head, right? So I'll just edit it a bit. So whenever you're working in silhouettes, just make sure you're keeping them readable. Yeah, I think my camera died. Did it? I think yes. Yeah. I just turned my webcam on. Yeah, that's all guys. I'll be adding the smoke later. This is how the page looks, the panel looks. Much cleaner, right? And not a nightmare to the inker. I mean, I'll be inking it on my own, inking this page, but whenever I'm giving a page to the inker, I mean, I need to clean it up, right? So yeah, take a look, proper look. And now we go here. And I'll be reading the comments now. Just give me a sec. I have my tablet in my hand. So Osku says, though I have published book 1, half stories done. Okay. I've always written feature-length stories, screenplays. I'm a writer, not the artist. Okay. Oh, cool. Karthik says, amazing. Thanks, man. रोहित भाई, अरे अभी तो एनआरआई की कथा भी शुरू होनी है, वहाँ अटेंडेंस लगानी भी ज़रूरी है. ओके. ये पहली बार जब किसी कॉमिक बुक आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ. काफ़ी जेन्युइन इंसान हो आप. थैंक यू मेहुल भाई. Seeing is seeing his okay. Thank you Rion, I got it. And the Haunter. भैया हम जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मैं क्या स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसमें मैं क्या स्टाइल को चेंज कर सकते हैं क्या? स्टाइल को आई वुड सजेस्ट कि स्टाइल चेंज ना करो अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो. अगर कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो. Rion, oh yes, gotta join NRI stream next. Okay, I'll go and have dinner or maybe join the stream. Mehul says, so imagine if I'm having a digital comic book company, how do make aware people about my comics? Okay, the first step I would say is go to the Indian comic book related groups, maybe even international, they're very active on Facebook, especially. Just go there, join the groups, and, post about it, that will give you some traction and you can start. That is a nice starting step, I guess. Osgo says, also is Raj Comics getting adaptation? There is some news. I don't know, dude. There have been so many rumors like that in the past 10 years or so, and none have come to fruition. So I would be very cautious. I am very cautious.
Windiers. The post kind of reminds me of Gear 5 Luffy. Okay. Quantum was talking about having your own community followers. Shashank. Shashank, hello. शशांक आप थोड़े से लेट हो गए हो. Yeah. Anyway, that is it, guys. पूरा पूरा 1.5 घंटा लग गया इसमें. We'll be doing it, finishing it, doing the rest of the panels अगले week, अगले Saturday. You know the drill. And I think this is gonna take inking tak some 4 or 5 more sessions, तो नवंबर ख़त्म होने तक शायद चलेगा ये. प्लीज़ बने रहिए, और जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ हिट द लाइक बटन वंस अगेन, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल. एंड इफ़ यू फील दैट people in your circle, your friends, anyone, acquaintances would be interested in the kind of videos I'm making, please let them know about my channel as well. And lastly, thank you so much for joining the stream and always being so supportive of my work. Thank you so much. Okay, I'll take the last comments now. रोहित भाई, देखा कैसे एक चैनल में दूसरे चैनल का प्रमोशन कर दिया. यस, ऐसा ही होना चाहिए. You can, I want to show my portfolio to you. Where can I send it? By the way, love your art. I am typing my email address art of in the comment section. You can send your portfolio there. Please just make sure that your portfolio does not exceed maybe 10 or 15 MBs. Smaller file sizes the better, but it shouldn't be so small that I'm not able to properly see the artwork also. Like kar do stream ko. Yes, guys, please do it. Thank you so much, everybody, and let's end it. Have a good night and happy Sunday, and see you next week. Bye-bye.